Kailash Satyarthi Children's Foundation, Justice for Every Child campaign, has been working towards providing legal and mental health support to child victims of sexual abuse by intervening in 5,000 strategic cases across 100 districts in the country. Donate to the campaign to ensure child victims of rape and sexual abuse receive the much needed support in their quest for justice. तो अभी जो आपने सुना ये एक कॉम्पोजिशन है इस मुहिम के लिए, इस कैंपेन के लिए, और इसको कंपोज जिन लोगों ने किया है वो आज हमारे साथ हैं। उन्होंने सिर्फ ये कंपोज नहीं किया है, वो इस कैंपेन में जुड़े हैं। क्यों वो जुड़े हैं आइए उन्हीं से जान लेते हैं। अयान अली बंगश हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। Thank you. And first of all, thank you so much for being a part of this campaign. It's a pleasure to be a part of this campaign. Why did you feel to, strongly to be associated? I think this idea came from Ayan Bhai. This whole thought, more than idea, the thought was that we should जुड़ना चाहिए हम लोग को, बिकॉज आज तक हमने बहुत क्लासिकल कॉन्सर्ट्स बजाए हैं, एनजीओज के लिए बजाए हैं, बट आयान भाई एंड आई नेवर गॉट एसोसिएटेड विद एनीवन। एंड इससे अच्छा कैलाश जी हुज डन सो मच, उनके साथ तो वी हैव शेयर्ड द स्टेज आल्सो, बिकॉज नोबेल पीस प्राइज जब उनको मिला था ऑस्लो में, he wanted my father and Ayan and me to be a part of the celebration from India's side. तो वहाँ से एक रिश्ता बना उनके साथ, और बस I wanted to just be associated because generally both of us feel for kids and for old people, जो neglect हो जाते हैं, which is not a nice feeling. So that's why we came. No, it's just an honor for us कि हम कैलाश जी के संस्था के साथ जुड़े हैं, because they are doing such a great job. I think every child deserves a childhood, and this is something that not many people talk about. India में एक वो भी रहता है कि लोग क्या कहेंगे in so many families, in so many situations. So to address this kind of a serious matter, and they've done so much work, and हम लोग जैसे अयान भाई ने कहा, we've been following Satyarthi ji's work so closely. And we are very fortunate to have performed at that historic moment when he received the Nobel Peace Prize. Correct. So we played at the prize ceremony and also at the peace concert. And it was one of the most memorable events. You had Queen Latifah and Steven Tyler, all these great people performing. So आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम जुड़ सके हैं, और ये जो ट्रैक सुना आपने, अयान भाई, मैं और कर्श काले भाई, we've collectively come together and made this track, and the full EP will be coming out soon. We are very fortunate to have people like Malini Awasthi ji, Mahesh Kale ji, Karsh Kale, and Karan Johar, who's a dear friend,
to get involved with this EP. So I hope that this creates more awareness and makes a difference. Also, one thing that I would like to tell my viewers, एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि आपकी जो upcoming album है, you have basically said that whatever will be the collections from that album, the proceeds will go to this cause. I think it's a very, very noble. No, I mean, this is the least we can do And for it's kids. just a humble effort. That's all from और us. kids are the future of our country. You know, जो कहते हैं नींव अगर स्ट्रांग हो तो इमारत मजबूत बनी जाती है. सो ये जो कर रहे हैं फॉर द किड्स, लाइक इनकी इनोसेंस जो जाती है बच्चों की, दैट्स द वर्स्ट थिंग एवर. दैट इनोसेंस जितना दिन रह सकता है और रहना चाहिए बच्चों में, रहना वो, दैट शुड ऑलवेज स्टे. इनोसेंस अंदर का चले जाता है, एंड इमेजिन व्हाट अ फ्राइटफुल जर्नी दे विल हैव आगे जाकर. So it's an honor and a pleasure to Every be child should just associated. laugh and smile eternally, हमेशा. इन बच्चों के लिए आप इस मुहिम से जुड़े, उसके लिए would you like to play something Definitely. for ज़रूर. the children, for your association with this campaign? What should We will play a very famous song of the iconic poet composer Rabindranath Tagore जी. उन्होंने अकेला चलो रे लिखा था. उसका बहुत ही एक पावरफुल मैसेज है कि बस चलते रहिए, वॉक अलोन एंड डोंट वेट फॉर द वर्ल्ड टू फॉलो यू. Okay. एंड देन फॉर द चिल्ड्रन विल प्ले होंगे कामयाब आल्सो. Oh, nice. Very nice. एंड आई होप इंशाल्लाह हम सब होंगे कामयाब. बिल्कुल. All right, Aman and Ayan Ali Bangash, thank you so much. Thank you. Thank you so much Pleasure for talking being to you. Thank you. associated with this project. Always. Thank you.